सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। What started or? Yeah, started. You completed the first chapter 7. You signed the attendance sheet. Have I spoken about management issues? Characteristics and all this? No. Now, how would I define the term? I wanted to close your volumes, everything, not required. How do you define the term tissues? Yeah, my introduction and last time. So, what is a tissue? A group of similar cells doing similar function. A group of similar cells performing similar function is what I mean by tissues. Tissues level study is two types: plant tissues and animal tissues. Plant tissues are further divided into. Okay, we start with the part that is plant tissues. Now, plant tissues are broadly divided into two main categories. One is what we say as meristematic tissue, and another is what we say as permanent tissue. So we need to understand the characteristics of each one. What is meristematic tissues? And there are many characteristics which are there. But the two main characteristics of meristematic tissues are they are continuously dividing cells. The only function is to divide. Okay, they are continuously dividing cells and they are non-differentiated. What is non-differentiated? They are not given a specific rule. अब तक differentiate नहीं हुए in terms of okay, you need to be this function, you need to be this function. Only basic function is good. They are non-differentiated. Now, then based upon the first characteristic, there is a cell whose only function is to divide. So, what is dividing in a cell primarily? Nucleus. So, in this case, then you will find there is a large nucleus because the maximum size has to be covered by the nucleus, but that is the one which is dividing. And compared to that would be very little cytoplasm, or say dense cytoplasm is comparatively much less. You can compare something like this. A cell है, so almost this much part is covered by the nucleus. Because the moment a cell divides, अगर nucleus छोटा होगा तो और भी बहुत सारी चीजें होंगी, which that also needs to divide. तब जाकर divide होगा. Here immediately divides. The nucleus division takes much faster. So dense large nucleus, dense cytoplasm. Very specifically, what type of cell wall it would have? अगर continuously divide हो रहा है, so it should be thick or thin. Thin. So it has thin cell wall. Apart from that, but about the shapes of this, they are mostly polygonal, compact, with no intercellular. आपको सब कुछ दिया है बुक में, अंडरस्टैंडिंग एडिशनल स्टडी कैन रिमेंबर. So here continuously dividing है, not assigned a role right now, general role है both करने का. Large nucleus, dense cytoplasm, thin wall, polygonal, compact. They are polygonal shapes basically. Somewhat polygonal, squarish, around, but they are more placed one after. Because of this, there is no intercellular spaces. What is this? Two cells. So this is what I mean by meristematic tissues. Then
this is the characteristics. Exactly opposite is this. Okay, so maybe the characteristics are good for this part, but if I take what are they? A point would come where the meristematic people divide. कहीं ना कहीं पे आके वो divide करना stop करेंगे. So at that time they form permanent tissues. So they are non-dividing cells derived from meristematic tissues. So point will come, meristematic stops, it will form permanent. Second, they will be यहाँ पे they are given a rule. Okay, if you are supporting, you are this, you are that, protective करने का. तो इनको अब role assign किया है. Okay, not a generalized category. There are specific role to be performed for different. उसके आगे में comparatively small nucleus, much cytoplasm, thick cell wall, or you can say they are oval, polygonal, elongated fiber. So इसमें अपने लिए कुछ इतना ये नहीं. हमारे लिए इसमें दो ही point है. Permanent tissues are always derived from meristematic tissues. Am I clear? Doubt there? Rajvesh. Now, these meristematic tissues are further divided into two main types. Now, these two main types, three main types. Three main types based upon their position. Where exactly they are formed. Now, let us take an example. I have a marker in mind. मान लो ये plant है. Okay, so what is this part of a plant? Sure. In a plant, which is the area where there is a continuous growth taking place? Stem, root. So all parts, ना? हमारा ऐसा नहीं है plant. Plant can grow in all directions. So there are three main parts where they grow. And we said, what is the basic function of meristematic tissues? Growth. Shift divide कर रहा मतलब growth ही कर रहा. So the primary function of meristematic tissue is to show growth, cell division, which associates with growth. So they are present in the apical meristem. We have intercalary meristem and we have lateral meristem. Now what are the three meristematic tissues? सबसे पहले apical. If I take this as a plant, what I find is ये ऊपर वाला part है, that is apical. Tip is known as apical. So a plant has a shoot tip, a plant has a root tip. The root develops inside, the shoot develops upwards, sideways, whatever. So then what are the tip present over there? Apical meristematic tissues. So tip over there has some tissues which are known as apical meristematic tissues. Am I clear? What is the function of this apical meristem? Helps in growth of root tip and shoot tip. The apical meristem is present at the root tip, present at the shoot tip. So obviously function is it helps in the growth of the root as well as shoot. Am I clear? So here apical is the thing but root and shoot. So growth of the root and the shoot. Intercalary. Intercalary between the nodes and internodes helps in the formation of leaves, fruits, flowers. All this comes under the intercalary. So internodes में leaves आते हैं, flowers बनते हैं, then the fruits are formed. So all this will come under intercalary. So height बढ़ी, root का depth बढ़ा, पत्ते आ गए, फूल आ गया, सब कुछ आ गया. One more thing is the girth of the stem. So lateral is what we say sideways. Sideways ऐसे बढ़ना.
What is that? It increases the girth of stem. So we never say the word, it increases the diameter of the stem, not a technical term. We normally say it as helps in increasing the girth of the stem. So question can be, where is apical meristem found? Root tip. Where is intercalary meristem found? Roots and that is leaves, fruits, flowers. Where is lateral meristem found? Inside the stem. The side in the stem helps in increasing the girth of the stem. Is it clear to everybody? कोई doubt है? Okay. चल book में ये दिया हुआ ये अपन ने पढ़ी. Something additional for you to understand is apical और intercalary. इन दोनों को प्राइमरी meristematic tissue भी कहा जाता है. And the lateral is known as secondary meristematic tissue. Why such like this? चल कोई भी प्लांट ले लो, चाहे वो it's a mint, चाहे वो it's a coriander, or it's a basil, or tulsi, or you can take mango, or you can take banyan, people, whatever. अगर सीड डाला, सीड से दो चीज सबसे पहले बाहर निकलती है, वो क्या है? Root and shoot. So every plant has a root and shoot. So can I say every plant has apical tissue? Compulsory सब में होगा. Every plant में एक हाथ leaf part आ ही जाएगा. So intercalary होगा. But do every plant stem increasing girth? Mint का ऐसा बड़ा mint का stem दिखाई देता है. Coriander का, mango में दिखाई देगा. ये big plant में दिखाई देंगे. Herbs, shrubs may not see a bigger stem. That's because lateral may not be present in all. So primary meristematic matlab those tissues which are compulsory present in all plants. What is this lateral known as? Secondary. Secondary matlab secondary. Optional. It may be present or may not be present. Am I clear? Everybody? Yes. कोई doubt है? चलो go ahead. इसको लिखना है ये. Yes, sir. No compulsion from machine. अगर लिखना है तो लिखो, नहीं तो आगे बढ़ो. Okay, then stop. मैं इसमें से part complete करता हूँ यहाँ पे, and then you can copy the entire form. Then, after completing the meristematic, we go on to the permanent tissues. Non-dividing है, differentiated है. Almost opposite to this is meristematic tissues. Now, meristematic tissue, permanent tissues are broadly divided into two main categories: simple and complex. What is simple and what is complex? Anybody? Simple क्या और complex क्या? Well, the simple means that is made up of only one type of cells. फिर उसको बोलेंगे simple. Complex, more than one type of simple tissues. Simple cells come together to form a tissue. We say it as complex. Just to correlate it, simple example, children. If I take a bottle or a box, इसमें सबके सब white marble है. There is only one type of box, white marble. ये simple. I have another box, white, black, green, blue. चार अलग type के marbles. Can I say it's a mixture of something that is known as complex? Simple में further divided into two types: protective and supportive. So we are protective and we are supportive as the complex in the simple form. Then within that protective part, again the name itself, protective matlab protection का काम करता है. Supportive matlab it helps in support. Protective is further divided into main types: epidermis and
Now, we first talk about epidermis. What is epidermis? Epi, outer. Dermis, skin. Okay, हमारे में ये epidermis है. Okay, इसके नीचे dermis होती है. Plant में the outermost layer of a plant is epidermis, but not skin. उनको skin नहीं बोलते. Okay, the outermost layer of any tissue is known as epidermis. So the bark is epidermis. Okay, the root hair is epidermis. The leaf outermost layer is epidermis. The lowermost layer of the leaf is also epidermis. But leaf में ऊपर नीचे होती. Upper layer, lower layer. So upper epidermis, lower epidermis. So all these are epidermis. Now, what is the function of epidermis? It is the outermost layer. So it acts as a protective layer. It doesn't allow the water, germs, anything to enter into the plant cell. So one outermost. Second, very important. In certain cases, specifically in the leaf. So leaf. In the leaf, the upper epidermis secretes a waxy layer known as cutin. ये waxy substance. It secretes a waxy substance known as cutin, which forms a layer on the leaf known as cuticle. So if I take any leaf, अगर मैं ये leaf मान के चलता हूँ, upper epidermis, lower epidermis. So upper epidermis के cells ये होंगे. There's somewhat polygonal along cells. On top of this, they would secrete a layer, a wax coating. This wax coating is known as cuticle. A wax substance को नाम दिया गया. Okay. What is the function of this cuticle? It minimizes the rate of transpiration. So it protects the plant from desiccation. What is desiccation? Drying up. So it protects the plant from leaf from drying up. बहुत ज़्यादा पानी किया तो leaf droop down. देखा ना? 2-3 दिन घर पे नहीं हो पानी डाला. So how do you reach the leaf? ऐसा will do it. That's because of the too much of water loss and the water is not gained by the plant. So the cuticle tries to minimize the loss of water by creating a waxy coating on it. Am I clear? Epidermis, so protective tissue. Another protective tissue which is very important is stalk. Where is stalk present? Stalk, क्या पढ़ा था cell में? The first cell was discovered from by from cork tissue. By then cork is nothing but a tissue exactly present beneath the bark. Bark के अंदर की तरफ there is a cork tissue. Okay, it is also secreting a waxy substance known as suberin. ये भी एक वैक्सी सब्सटेंस सिक्रेट करता है, ये भी करता है. ये क्यूटिन है तो ये सुबेरिन है. Okay, because of this waxy coating within the stem part, okay, it makes the stem light, waterproof as well as fire. Commercially हम cork को exploit करते हैं for making plies, good qualities of plies. So कहीं ना कहीं cork again protective, it protects the plant again in terms of germs entering into the plant etc. ये बहुत ज़्यादा hard or resistant. That is what cork tissue is all about. So we have epidermis and cork. समझ में आया? Now then comes the next tissue, supportive. The name itself helps in support. Further divided into 3 types. What are the 3 types? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. I'll write, don't worry. Okay, just right. I'm saying it. Parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. These 3 put together, primary function is support. Okay. Now, so this is always said in comparison manner.
ये जल्दी बाहर करने के लिए कंपैरिजन में ही बेटर हो जाता है. सो व्हाट आई वांट टू डू इज इतना कॉपी कर लेना, यहाँ पे ये कॉपी कर लेना, ये इतना रख के छोड़ देना, सो दैट वी कंटिन्यू आए. Done. Done. Hurry up, children. After completing, we'll open your volumes, page number 104.
Done. Now, so we go ahead to the next part, that is parenchyma, collenchyma, and sclerenchyma. I said we learn this in a comparison manner only. It is much easier to remember. So I wanted to open your book. In that 104, the table given. Mila? Jaldi. ओके चल अब वहां पे ध्यान देना इन द टेबल दैट गिवन यू शेप कैक्टस के अंदर उसके नीचे फिर नेचर ऑफ सेल्स नेचर ऑफ सेल वॉल ऑकरेंस एंड फंक्शन व्हाट इज नाउ थोड़ा उसमें हमें चेंजेस करने हैं ताकि इजीली याद रहे सबसे पहले वहां पे लिखा है शेप दैट इज फाइन उसके बाद लिखा हुआ है नेचर ऑफ सेल्स इफ यू सी वहां पे नेचर ऑफ सेल लिखा है थिन वॉल्ड एंड लिविंग फिर लिखा है वॉल्ड एंड लिविंग और फिर लिखा है थिक वॉल्ड एंड डेड इन पूरे सेंटेंस में से थिन वॉल थिक वॉल थिक वॉल वो सब कट कर देंगे हमें सिर्फ लिविंग लिविंग डेड इतना ही चाहिए नेचर ऑफ सेल्स में लिविंग लिविंग डेड ओके अब उसके बाद नेचर ऑफ सेल वॉल लिखा हुआ है अब वहां पे चिल्ड्रन थोड़ा लास्ट लाइन पे ध्यान दोगे तो ये ऐसे दिया हुआ है बॉक्स में यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ सेल वॉल राइट फिर वो बॉक्स बहुत बड़ा है और जगह बहुत है यहाँ पे अब चलन उसी के नीचे फर्स्ट बॉक्स में लास्ट लाइन पढ़ना क्या लिखा है उसी बॉक्स के अंदर फर्स्ट लाइन देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जहां पे लिखा है ना देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस उसके ऊपर एक डार्क लाइन खींचना है मेक दैट अ सेपरेट पॉइंट ठीक है इसके बाजू में लिखना इसके नीचे तो यहाँ पर भी लाइन खींच देना इसे एंड राइट intercellular spaces. You write intercellular spaces. हमने उस दो पॉइंट को एक पॉइंट सेपरेट कर दिया अलग कर दिया देन सेकंड लाइन में देखना वहां पे सेकंड पार्ट में लिखा है देयर आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस वो थोड़ा लाइन को एडजस्ट करना है इसमें वो देयर आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस वो लाइन अलग हो जाएगा उसमें से एंड थर्ड इसमें इंटरसेलुलर स्पेसीज आर नॉट फाउंड उसके ऊपर भी लाइन आएगी सो दिस बिकम्स अ कंप्लीटली सेपरेट पॉइंट वन देयर आर वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसीज सेकंड देयर आर लेस इंटरसेलुलर स्पेसीज लास्ट देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसीज तो वो याद रखने के लिए आसानी होती है मोर लेस no interface. Then children they are given you occurrence फिर फंक्शन दिया ओके उसमें कोई चेंजेस नहीं करना तो वैसे के वैसे ही पढ़ने हम तो shall I start explaining now okay सबसे पहले हम parenchyma to see the part parenchyma collenchyma sclerenchyma चल order याद रखना important है then only you are able to remember much fast now what is parenchyma sclerenchyma याद रखना है सबसे पहले याद रखोगे नेचर ऑफ सेल्स में क्या पैरेंकाइमा लिविंग है कोलेंकाइमा लिविंग है स्क्लेरेंकाइमा डेड है सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर लिविंग डेड ओके फिर सेकंड पॉइंट याद रखना इन टर्म्स ऑफ शेप तो शेप में पहले वाला देखना दे आर ओवल राउंडेड पॉलीगोनल यूजुअली लूज है इट इज इजी टू रिमेंबर ओवल round polygonal usually packed okay अब तुरंत collenchyma पे देखिए
क्या लिखा हुआ, cells are elongated in shape, स्क्लेरेंकाइमा में लिखना elongated and fiber, चल थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम। कोलेनकाइमा में क्या, कोलेनकाइमा cells are elongated in shape, वहां पे लिखोगे कोलेनकाइमा cells are polygonal and elongated in shape, polygonal and elongated, तो वहां पे वो ऐड करोगे polygonal and elongated in shape। अब स्क्लेरेंकाइमा में ध्यान देना, स्क्लेरेंकाइमा cells are elongated and fiber, so why I have given you polygonal, yeah, another of this, अपन ने पढ़ रहे हैं पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। हमने कहा नेचर ऑफ सेल, लिविंग आसानी से याद रहता है। अब फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या था, शेप। शेप में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, दे आर सर्कुलर और दे आर ओवल और पॉलीगॉनल, देन कंटिन्यू कर रहे हैं, ओवल, राउंड और पॉलीगोनल, नेक्स्ट gonal and elongated, जहाँ पे एंड हुआ उसको polygonal, elongated, elongated आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, elongated and fiber, again it is very easy to remember, circular, polygonal, elongated, fiber line, each time a new word will be added to the previous one, so that is easy to remember। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वहां पे नेचर ऑफ सेल वॉल लिखा, वहां पे देखना नेचर ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इज थिन एंड एनक्लोज द डेंस साइटोप्लाज्म व्हिच कंटेन्स अ स्मॉल न्यूक्लियस एंड सराउंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूम। चल हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उतने से पॉइंट से मतलब है, सेल वॉल इज थिन। तो इफ आई रिमेंबर यहाँ पे सेल वॉल पॉइंट है, नेचर ऑफ सेल वॉल, what is it? It is thick. Colonkaima, it is thick at corners, वहां पे लिखा देखो, सेल वॉल थिक इरेगुलरली एट द कॉर्नर, तो सेल वॉल थिक है पर सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर एंड नॉट थ्रू आउट। थर्ड में देखना, सेल वॉल थिक ड्यू टू लिग्निन व्हिच हार्डन्स, नाउ यू कैन से इट इज thick throughout due to lignin deposition. Now, what do you mean by this? Is simple way to understand, children. ये आपका polygonal cells, thin wall, colonkaima, is a thick at corners, sclerenchyma, fiber log elongated and thick throughout. So this is what comparison wise is. Am I clear? You follow me? Inward, thick at corners, thick throughout due to lignin deposition. याद आया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ thick throughout the part. Next children is occurrence. अब यहाँ पे ध्यान देना because यहाँ से अपना function चालू जाएंगे। Occurrence found in stem, root, leaves, flowers and fruit. It is found in soft part of the plant such as cortex of roots, ground tissue in stem, mesophills of leaf. Okay, I want you to underline cortex, ground tissue and mesophyll. चल ऊपर की लाइन लिखोगे तो वहां पे लिखा है फाउंड इन स्टेम, रूट, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। चलो कैन आई से एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट में पैरेंकाइमा है, रूट, फ्लावर, लीव, सीड सब में पैरेंकाइमा। ठीक, अब स्पेसिफिकली मुझे बोलना है तो रूट में, कॉर्टेक्स में,
स्टेम में ग्राउंड टिश्यू है और लीफ में मेसोफिल। ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, आई विल एक्सप्लेन। अब साथ में फंक्शन पे भी ध्यान देना, वहां पे लिखा हूं, इट acts as a packaging tissue to fill the spaces between other tissues. It gives support to the stem of the herbaceous plant. It also stores food and water. 3 फंक्शन। पहला फंक्शन पैकेजिंग, अंडरलाइन पैकेजिंग, उसमें पैकिंग लिखा है ना, वो पैकिंग। सेकंड इसमें सपोर्ट, और थर्ड इसमें स्टोर्स। तो 3 फंक्शन है, एक तो पैकेजिंग का काम करता है, एक तो सपोर्ट का काम करता है, और एक तो स्टोर का काम करता है। नाउ देन इफ यू बाय अ न्यू 80 और बिग साइज एलईडी टीवी, बहुत बड़े साइज का फुल स्क्रीन खरीदा आपने, टीवी बाय फ्रॉम टोमा, घर पे ऑर्डर आएगा। सो टीवी ऐसे ही आता है या पैकिंग आता है? सो देयर इज अ कार्टन, इसके अंदर टीवी रखा है, आपने कार्टन को ओपन कर दिया। आई होप कार्टन पता है राउंड को, तो यू ओपन इट, व्हाट विल फाइंड इनसाइड? गुड, क्या मिलेगा? बबल रैप। शायद बबल रैप में टीवी पैक किया होगा और साइड में थर्मोकोल भी होगा। क्यों? इससे और गिरेगा तो प्रोटेक्शन ना, गाड़ी क्या गिरेगा नहीं तो। चल, गाड़ी अपना इंडियन रोड है, जग्स, होल्स, बॉटल्स, देयर इज ऑब्वियसली अ मूवमेंट। पता चला ठाप ठाप ठाप, घर पे आके आया टुम टुम टुम, पार्ट्स बाहर निकल गए। टू अवॉइड दैट देयर इज अ कंप्लीट पैकेजिंग। तो पूरे स्पेस के बीच में, ताकि हिले ना, बेसिकली वो हिले ना, वो जितना भी एम्प्टी स्पेस है उसको अपन पुट इट विद बबल रैप एंड थर्मोकोल। एग्जैक्टली आप कोई भी ग्लास की apparatus खरीदते हो, आप अगर कभी बॉटल्स या मे बी ग्लासेस यूज करते हो फ्रॉम द स्टोर, तो ग्लासेस को भी पेपर रैप करके डाला जाता है ताकि एक दूसरे से टक्कर के टूटे ना। एग्जैक्टली सेम फीचर, दे आर एक्टिंग पैकेजिंग टिश्यू इन स्टेम। अगर मैं स्टेम का रूट का क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, ये है रूट का क्रॉस सेक्शन, कट करने के बाद ऐसे गया रूट, द रूट हियर विल बी सीन लाइक दिस, outer of the root. What is the outermost layer of a root? Which is the outermost layer of a plant? Epidermis. Children, अभी अपन ने पढ़ा, the outermost layer all is epidermis. ये epidermis है, इसके बीच में और एक लेयर होता है, endodermis. So epidermis and endodermis. इन दोनों के बीच में there is empty space. That space is filled by a grooves, the circular in nature, that are known as which are nothing but parenchymatous cells. समझ में आया? ये रूट के बीच में पैकेजिंग करना। अब अगर सेम चीज में स्टेम को कट करता है क्रॉस सेक्शन, तो मुझे ये दिखाई नहीं देगा, रूट है, सिर्फ सर्कल दिखाई देगा। इसके बीच में भी एपिडर्मिस, मतलब बार्क स्ट्रॉन्ग एपिडर्मिस, मिडल लेयर एंडोडर्मिस, इनके बीच में जो सेल्स होते हैं उनको बोलेंगे ग्राउंड टिश्यू। अगेन पैकेजिंग का काम कर रहे हैं सेल के अंदर। अब जब मैं लीफ का क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, तो लीफ का दिखाई नहीं देगा, सो व्हाट वी फाइंड इज upper epidermis, lower epidermis. इन दोनों के बीच में there is a group of cells, एक elongated होते हैं और एक round होते हैं। इन दोनों को मिला के बोला जाता है mesophyll cells, which is again packaging. So mesophyll in the leaf, cortex in the root, and ground tissue in the stem. All are packaging tissue just to fill the space between the
मिडल पार्ट की उसके बीच में इस स्टेज को भरने के लिए ये काम आता है। क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट है? ओके नाउ चिल्ड्रन, सो एक फंक्शन हुआ पैकेजिंग, समझ में आ गया। सेकंड फंक्शन क्या लिखा है? सपोर्टिव। हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस मतलब क्या? छोटे छोटे हर्ब्स जो होते हैं, तो उनमें पैरेन्काइमा आल्सो हेल्प्स इन सपोर्ट, बिकॉज़ उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? उसका मेन हेडिंग ही सपोर्ट है, कहीं ना कहीं सपोर्टिंग का काम तो करेगा ही करेगा, सपोर्टिव इन फंक्शन इन हर्बेशियस प्लांट, बट एट द सेम टाइम स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर। व्हाई दिस? बिकॉज लीफ के अंदर ये जो एलोंगेटेड सेल्स है, ये क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर, which bring about photosynthesis। अगर फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है तो फूड बनेगा, फूड बनेगा तो स्टोर भी करेगा, so that is storing food as well as water। okay? अब modifications of parenchyma, नीचे के बैग अपने देखना। parenchyma में जब लीफ के अंदर, मेसोफिल्स के अंदर there are chloroplast present, तो ये क्लोरोप्लास्ट है। what is chloroplast doing? photosynthesis। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर है? मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स कौन से टाइप के हैं? पैरेन्काइमा। दोस पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उनको अपन बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। नीचे लिखा देखो, क्लोरेन्काइमा। In this, the parenchyma cells develop the chloroplast and the start photosynthesis. It is stored in the mesophils of the leaves. Just 1 minute more. Parenchyma. So जिस cells में chloroplast नहीं है, पर जिनके अंदर air lock हो जाता है, there is a vacuole having air in it, helping it to float. Then that is known as parenchyma. Basically found in floating aquatic plant. प्लांट फ्लोट करते ना, तो उनमें हवा रखेगा तो ही फ्लोट करेगा। अगर आपने स्विमिंग सीखा होगा तो फ्लोटर यूज करते हो, फ्लोटर में क्या होता है? एक्चुअली हवा ही होती है ना, ताकि आपको वो फ्लोट कर निकालना। यहाँ पे भी वही है। इज इट क्लियर? ओके, डॉक्टर लेक्चर एंड्स 15। कंटिन्यू फ्रॉम योर नेक्स्ट लेक्चर।